ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, ऑपरेटर्स आर वेरी इजी। ठीक है, दे आर बेसिकली स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन, एक तरह के जो कुछ अर्थमेटिक, लॉजिकल या फिर एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में जब हम मैथ्स करते हैं तो हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स गिवन रहते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से। सो दोज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। सिमिलरली अगर हमने कभी लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, सो जब हमने गेट्स पढ़े हैं तो गेट्स में किस किस तरह के रहते हैं? और, नॉट, एंड, ये रहते हैं। उसके अलावा भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स, कुछ अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स गिवन रहते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज, किस तरह से किए जा सकते हैं। सो basically these are your arithmetic operators. Okay, plus, minus, multiplication, division. This percent is called module. Okay, this is called division, and this is called your what? Oh, I forgot the word actually. So basic, yeah, I completely forgot its word, but I will show you an example. So अगर किसी को word याद है तो please मेरे को बता देना. So let's say there are two variables. Okay, one is x and one is y is equals to 10 and 20. Okay, 10 and 20. So x is 20, x is 10, and y is 20. In case if I want to do an addition, oh, so okay, it is called exponent. Okay, I have written here. So if I want to do the sum of x and y, so x and y will sum up to 10 plus 20 is equals to 30. 30 is given here. If I want to do the subtraction, x minus y, I will get the subtraction. In case if I would want to do the multiplication, I will get the multiplication. So 10 into 20 will be 200. In case if I want to have the division, we will see the answer to this. Similarly, for modulo, modulo is actually very helpful. Okay, this is one of the most useful operator I see. बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उससे। ठीक है, सो हमारे पास में ये सारी चीजें गिवन है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, मैं एक काम करता हूँ, जो हमने कल आउटपुट के फॉर्मेट्स देखे हैं, मैं सिमिलर तरह के आउटपुट फॉर्मेट्स यहाँ पे यूज करता हूँ। एडिशन, कॉमा, सब्ट्रैक्शन, कल हमने ये डिस्कस किया है, राइट? आई होप सबको याद है। Perfect. Now I will run this. Okay, I get an error. X is missing from here. Okay, so this is what we have got. Okay, now let's understand. So we understand the addition, understand the subtraction, we understand the multiplication, we understand the division. Now what is modular division? So modular division is a very simple and straightforward answer. Okay, modular division ऐसा division होता है in case you are dividing something from some other number, जो भी रिमाइंडर आता है वो आपका मोड्यूलर डिवीजन होता है। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आता है वो मोड्यूलर डिवीजन होता है। लेट्स से यू आर डिवाइडिंग 5 बाय 2, सो व्हाट विल यू डू? 2 2 आर 4, सो तुम्हें 5 माइनस 4 1 मिलेगा, सो 1 इज योर रिमाइंडर। सो इन केस, ठीक है, एज एन एग्जांपल, अगर मैं 5 मॉड्यूलो 2 करता हूं तो मुझे आंसर 1 मिलता है, बिकॉज 1 इज माई रिमाइंडर। नाउ जब 10 को 20 से डिवाइड किया गया, सो कुछ भी डिवाइड हुआ ही नहीं, एवरीथिंग केम ऑटोमेटिकली इन रिमाइंडर। ठीक है, कुछ भी डिवीजन नहीं हुआ, सो दैट इज योर रिमाइंडर, दैट इज व्हाई द मॉड्यूलर डिवीजन हैज कम टू 10। सिमिलरली आपका फ्लोर डिवीजन रहता है, एंड एक्सपोनेंट मींस पावर रहती है। सो लेट्स से पावर मींस 2, जैसे 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 2 का क्यूब, अंडरस्टैंड the way it comes up to 8. Similarly, what exactly happening at this moment, यहाँ पर 10 की पावर यहाँ पर 20 हो रही है. So those who know about this concept, so 10 की पावर 20, so 10 is getting multiplied 10 times, 20 times, 10 into 10 into 10 into 10 into 10 up to 20 times. So this is the concept of arithmetic operators. Similarly, तुम्हारे पास में कुछ comparison operators भी रहते हैं.
Now, comparison operators are extremely useful when we study if-else statements because if-else statements के लिए comparison operators ही picture में आते हैं. Okay, they are the only ones who help you out. किस तरह से करना है या क्या करना है. So, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है. लेट्स से तुम्हारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, a is 10, b is 20. What you are so first thing to understand with comparison operators that they only return the Boolean answer, which is either true or false. Okay, either true or false. So as an example, if you think about it, let's say मेरे पास एक वेरिएबल है a, x ऊपर गिवन है एंड y ऊपर गिवन है. ठीक है, सो मैंने x एंड y अगर लिया, सो मेरे पास कितना मिला, 10 एंड 20. ये मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन करके रखे हुए यहाँ पर. नाउ इफ समवन कम्स अप टू यू एंड आस्क कि टेल मी, एंड तुमसे क्वेश्चन पूछता है क्या x की वैल्यू y की वैल्यू से ज्यादा है, what will you say? You will say no, nahi hai. So what you are saying in Boolean terms, you are saying false. Similarly, if someone comes up to you and asks, is the value of x less than the value of y? You will say true. It is true. So exact same concept goes with the comparison operators. They give you the answer in true or false only. वो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं देते. So let's say print a is less than b. Okay, so it will give you either true or false. Next is check a is greater than b. So print a is greater than b. So this is your less than operator. This is your greater than operator. Check a is equal to b. And now हमें पता है कि जनरली इक्वल टू का सिंबल ये रहता है, बट अगर हमने ध्यान दिया हो तो हम सिंगल इक्वल्स टू का सिंबल पाइथन के अंदर वेरिएबल असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं. We use this symbol for variable assignment. It means this symbol cannot be used here. That is the reason what happens is that we use double equals to. Double equals to means it is checking the value of left hand side whether it is equal to the value of right hand side or not. उसके बाद what it is asking, a is not equals to b. Now not equals to symbol तुम्हारा इस तरह से given होता है Python में. So what do you do? A exclamation mark equals to b. This is stating that a is, you are checking whether a is equal to b or not. Second last is check a is a greater than or equal to b. So सबसे पहले हमने क्या देखना है, a greater than equal to b. Similarly, a less than equal to b. So तुम्हारे पास में इतने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं. लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, and you can run this and you will get the answer as expected. A is less than b. A की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, so yes, true. हाँ, so first true है. A is greater than b, false. A equal to b, false. A is not equal to b, true. A is greater than equal to b, false. A is less than equal to b, true. So तुम्हें इस तरह के आंसर्स मिल जाते हैं. So these all are your comparison operators, and these comparison operators are extremely helpful when you are discussing or when you are dealing with if-else statements. क्योंकि आप if-else statements को in true and false के basis पर ही process करते हो. If something is there, then do this. If something is there, then do this. Now the answer to something is there आपको true या फिर false में ही return होता है. In that situation, you use these comparison operators. आफ्टर कंपैरिजन ऑपरेटर्स तुम्हारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स रहते हैं. ठीक है, तुम्हारे लॉजिकल ऑपरेटर्स रहते हैं. बिटवाइज ऑपरेटर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो एक्चुअली में नीड नहीं रहती है, सो वी विल स्किप दीज. लॉजिकल ऑपरेटर्स तुम्हारे एंड और एंड नॉट. सो अगर किसी ने भी गेट्स पढ़े हैं, ठीक है, इन देयर 12th क्लास, इन देयर 12th grade स्टडीड गेट्स, सो गेट्स में किस तरह की चीजें रहती हैं, एंड इवन इफ यू आर नॉट, सो 3 kind of operators, and, or, not. ठीक है, and, or, and not, and this also returns the value in true or false. This also returns the values in Boolean operators only true and false. Now इसके बाद
एक 1 सेकेंड गाइस। सो इसके बाद हम बुलियन ऑपरेटर्स की हेल्प से ही लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आई विल राइट दिस फर्स्ट एंड देन हम इसके आंसर्स पर डिस्कशन करते हैं। हम्म, ठीक है, सो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है दैट A and B, now A and B means the value of A is true, the value of A is true, the value of B is false. If you think about it, अगर मैं, so let me give you one other example first. Let's say मेरे पास में एक वैल्यू है, ठीक है, सेम वैल्यू पिक करते हैं हम, A is equals to true, B is equals to false. Now what I will do is I will convert the A into true, ठीक है, sorry, into an integer, ठीक है, एंड मैं एक काम करता हूँ, सिमिलरली मैं यहाँ पर ही इसको p को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। व्हेन आई रन दिस पीस ऑफ कोड मुझे क्या मिलता है, 1 and 0. सो दिस इज अ लर्निंग फॉर यू दैट अगर आप बुलियन ऑपरेटर्स को इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हो तो ट्रू बिकम्स 1 एंड फॉल्स बिकम 0। ठीक है, ऑटोमेटिकली तुम्हारी चीजें इस तरह से चेंज हो जाती हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल इन दैट सर्टेन वे। A is equals to true, B is equals to false. यहाँ पर तुम्हारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, A and B. एंड ऑपरेटर तुम्हारा क्या देखता है कि वट एवर वैल्यू विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एंड, बोथ ऑफ देम शुड बी ट्रू। दोनों वैल्यूज तुम्हारी ट्रू होंगी तभी तुम्हारा जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज वो ट्रू नहीं आएगा। सो लेट्स से एंड एनीथिंग विच इज जीरो इज फॉल्स, एनीथिंग विच इज नॉट जीरो इज अ ट्रू। यू कैन थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। और ऑपरेटर तुम्हारा क्या करता है, आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो मैं ट्रू दे दूंगा, ये ट्रू। उसके बाद नॉट ऑपरेटर, नॉट तुम्हारा बेसिकली ये चेक करता है कि जो तुम बोल रहे हो वो नहीं है, ऐसा चेक करना है। सो मैंने क्या करा, प्रिंट नॉट बी। सो वो ये चेक कर रहा है कि जो बी है वो ट्रू नहीं है। सो प्रिंट नॉट बी विच इज ट्रू, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ ट्रू। सो एंड ऑपरेटर तुम्हारा क्या देखता है, बेसिकली इफ आई give you in short, it checks whether the both of the values are true or not. और ऑपरेटर तुम्हारा देखता है कि तुम्हारी दोनों वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है या नहीं है, कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जानी चाहिए। नाउ दीज एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑपरेटर्स along with कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स करते हैं, क्योंकि आपने एक कंडीशन लगाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प से। नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प से आप, जरूरी नहीं है कि आप सिंगल ही इफ स्टेटमेंट को देखते हो। ओके, आप सिंगल को ही देखते हो, यू डू नॉट लुक एट मल्टीपल, सो यू आल्सो लुक एट मल्टीपल, यू जस्ट डू नॉट गो फॉर सिंगल, आप मल्टीपल भी देखते हो। इसलिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हो। आफ्टर दैट there is another operator which is called identity operator. Now identity operators are very easy peasy, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट ये वो चेक करता है कि इफ समथिंग इज समथिंग और नॉट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज a is equals to 5, b is equals to 5. So next line में I'm writing print a is b. So print a is b means it is checking whether a is b or not. So kind of equals to equals to, ठीक है, kind of equals to, you can think like that. Okay, you can think like that, a equals to equals to. Similarly, is not can be considered as not equals to.
So the operations are exactly in the same way as well. The last type of operators are membership operators. Now, membership operators are extremely useful. Okay, I must tell you this because मैंने जब लास्ट टाइम इनको यूज कर रहे थे दे डिड नॉट लुक दैट यूजफुल, बट मैंने जिस तरह से यूज करते हुए देखे थे वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था. सो लेट्स से तुम्हारे पास में एक एग्जांपल है, ठीक है. लेट्स से यू हैव एन एग्जांपल. एक लिस्ट है तुम्हारे पास में, या फिर इनकेस अगर तुम्हारे पास में कोई लिस्ट भी नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास में मान लो Amazon के रिव्यूज हैं बहुत सारे, ठीक है. एंड एज एन एग्जांपल कंसीडर करो कि Amazon के रिव्यूज में सबसे पहले नंबर पर पर्सन का नेम लिखा हुआ होता है, सच एज दिस. लेट्स से ABC पर्सन का नेम है, एंड आफ्टर दैट पर्सन का जो भी ऐसे 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 करके ऐसे भी लिखा हुआ था तुम्हारे पास में ऐसे 50-60 रिव्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे करके रिव्यूज लिखे हुए हैं, ठीक है. एंड ईच रिव्यू इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. सारे के सारे ये डबल कोट्स के अंदर है. एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ डबल कोट्स. सारे के सारे डबल कोट्स में लिखे हुए हैं. एवरीथिंग इज इन दिस मैनर. नाउ इफ समवन इज कमिंग अप टू यू एंड आस्किंग, ठीक है, लेट्स से तुम्हारे पास में एक सेकंड लिस्ट अवेलेबल है जिसमें तुम्हारे लोगों के नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है. ये जो ABC है ना, ये ABC की जगह कुछ और भी हो सकता है. नाउ समवन इज कमिंग अप टू यू एंड आस्किंग कि whether that name exist in any one of the reviews or not, ठीक है. क्या वो नेम किसी जगह पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. इन दैट सिचुएशन व्हाट डू यू डू, यू यूज द इन ऑपरेटर, एंड इनको तुम ऑपोजिट कर दोगे. इन दैट केस इट विल बिकम नॉट इन ऑपरेटर. सो ये किस तरह से काम करता है. लेट्स से तुम्हारे पास में एक लिस्ट है व्हिच इज दिस इज अ सेंटेंस या फिर दिस इज अ स्ट्रिंग. तुम डायरेक्टली लिख सकते हो str in a. अगर str in a उसे फाइंड होगा which is here, in that case it will give you true, otherwise it will give you false. Similarly, when you're dealing with lists, let's say तुम्हारे पास में एक list है which is 1 2 3 4, and if you are saying 1 in list, then it gives you true. Similarly, if you try to do 5 in LST, it will give you false because 5 is not there in the list. So this is how the membership operators, logical operators, comparison operators, identity operators, arithmetic operators are used. इनका एक्चुअल यूसेज हम if else में देखेंगे.